Karbi Anglong live kelang ratun duan pinili tum Karbi Anglong live pen nonamat kinili Bikram Teron lapen nili long na abdun cameraman abor lang ni tum non ke do bangke denarong ahichi long sidolo lake denarong ahichi lo lang lo nilipi non bangke four lane sitame tangkai lo 80% Karbi Anglong four lane mga tangkai lo ili tum pudam na Silveta area dola la si pinini tum kajab athipi bangela lo ili tum chuke damtang tarik krep hopen tarik cleaner keban 15 to 18 IIT student atum ITN atum alang litum dak difurong supi pen cenglok langbuku pen cenglok siluni jan pen cenglok kape gadim alang litum winter camp alang litum labang soja mek deng ponlo jastemet student atum Karbi Anglong apur kimo alama puthak punon ladak forest alama puthak punon lapen society alam punon lapen Karbi Aron atang alam punak punon lapen Karbi Anglong kiji kelang adim ans tame alang litum labang so adim nang kelang ji phase alang litum phan chophalo litum Karbi Anglong Tourism Department ahin pesi sari tesing hi alang lisi patir people lo lapen Tourism Department atum ta dudun lo lapen Dark Forest atum ta dudun lo alang litum ke la ITN atum bang ke jasemet alang litum Assam along ke Guwahati long sido alang litum institution ke same alang litum ladak na chali phan Maharashtrian do Bihar tum na do Kerala pen do kape student atum do pick so pin cenglok lapen alang litum ke kape gadim si every year alang litum annual labang so winter camp padodo labang so winter camp dohud alang litum resource person chepon po lapen halat swadim long damlo te resource person to men chingki than po halat swadim aklong alam purkimus tamelang litum chingki than lapuson padu po lason daklaksi peneng asengkan bangke alang litum Karbi Anglong sina homrilo alang litum trekking sidame padulo trekking pen cenglong angton pen penangan alang litum kijui kelang adim an alang litum juidam si lapen alang litum dak DC atum ben interaction dolo kape student organization tum ben interaction dolo lapen ladang intellectual atum ben resource person atum ben alang litum interaction program lapuson deng polo pini bang alang litum non kece dam tu po alang litum non camp ben alang litum bas humni bang ibom lo lapen alang litum ben le ethithini alam alang litum experience alam pudak alang litum Karbi Anglong ke do sek alam pudak sami litum cingki jetan padu ponana ये तो सभी फोन में खराब हमने फोन दियो तो एमो नगा दे का को दिबो अपनी आगो भोगाई लक्षण भोगवा तो बोलेंगे माने आगो तो वीडियो कर अंडा और बेस और बात वॉलंटियर चाहिए वॉलंटियर भी करने के लिए अपने पॉकेट में ना डाल देना इनका दांत बहुत क्लीन हो गया पानी से क्लीन हो Right now I'm here with a student of IIT Guwahati and they have come here for the annual winter camp. We would like to ask you a few questions about how your experience, how was the adventure and all these things. And yeah. Actually, it was my first camping. Yeah. So मैं तो बहुत ही एंजॉय किया यहाँ पे आके। अच्छा। और मतलब यहाँ का जो कल्चर है और कल्चर के साथ जो नेचुरल व्यूज है ये इतना सुंदर है क्या ही बताऊँ मतलब मैं तो फुल्ली इम्प्रेस्ड अच्छा। और यहाँ का मतलब सबसे जो बड़ी बात है ना कि लोगों का जो यहाँ का वेलकमिंग नेचर ये बहुत ही बढ़िया है। और एक बात मेरा जनरली मतलब ऑयली फूड से थोड़ा दिक्कत है तो यहाँ पे आके तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि यहाँ का खाना एकदम नॉर्मल सा मतलब बहुत ही सुंदर हेल्दी खाना एकदम तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपका नाम? मैं मुस्फिका। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल। हाँ। तो आपका असम पहले से आना जाना? ना मैं कभी नॉर्थ ईस्ट में आई नहीं, इवन मैं दार्जिलिंग भी नहीं आई कभी। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन असम? हाँ
IIT गुवाहाटी में, मतलब उसके थ्रू। तो आपका जाने के बारे में बताइए कि आपका एजुकेशन और आपका फ्यूचर के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो मैं तो अभी जनरली मतलब IIT गुवाहाटी में मास्टर्स कर रही हूँ केमिस्ट्री में। इस बार मेरा फाइनल ईयर है और इसके बाद मैं PhD करूँगी। अच्छा, IIT में एक्चुअली क्या होता है, मतलब थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? IIT में मतलब पढ़ाई तो होता ही है, तो आप तो जानते ही हो। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो लोगों के साथ मतलब एक्सप्लोर करना, मतलब बहुत ही जैसे हम लोगों को ना, जैसे एग्जाम भी इतना टफ होता है और उसके पैरेलली हमें एंटरटेनिंग चीज़ों भी बहुत ही होता है। अच्छा। मतलब लाइक कुछ प्रोग्राम हो, ओरिएंटेशन हो, कोई मतलब बहुत ही बढ़िया होता है, मतलब सब कुछ मिला के। वैसे तो आप लोग एक बिग बॉस टीम की तरह है, तो हर परिवार की तरह है। हाँ। और हर सदस्य मतलब बाहर से है, कोई अलग दुनिया से, मतलब कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई हाँ, अलग-अलग स्टेट। तो एज अ टीम वर्क हाउ यू मैनेज दैट, मींस कोई किसी से झगड़ा वगैरह कोई पर्सनली कोई इशू तो नहीं है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इवन मतलब मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मैं थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ, तो वेस्ट बंगाल फ्रेंड मेरा कम है, बाकी स्टेट्स का ज्यादा है। कोई आपका सामान कोई चोरी वोरी तो नहीं हुआ ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपका एज अ टीम, तो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएंगे? बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड ऑब्वियसली भावना। So Bhavna, हाँ जी। how was your experience? इट वॉज वेरी गुड। यहाँ पे बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो हम लोग अभी 4th डे है ना हमारा, तो बहुत मज़ा आया। हम ट्रैकिंग पे गए और कैंपिंग की हमने, और रात वाला जो सेशन होता था उसमें बहुत फन होता था। तो कल भी हम लगभग पूरे रात भर सोए नहीं, पूरा गाना वाना, स्टोरीज, ये सब बहुत मज़ा आया। तो आप जैसे भी देखने में आपको आलिया भट्ट जैसे ही लगा। तो ट्रैकिंग आपका ये पहले एक्सपीरियंस या उसका? नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ पे तो हाँ जुबिन नौटियाल, वो वहीं से। हाँ, तो एक जोर से तालियां उनके लिए भी। वो पहाड़ी इलाके से हैं। हाँ जी। तो यहाँ के जनजाति के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, ट्रैकिंग का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ भी मैंने ट्रैकिंग की है, पर उतना नहीं किया, मतलब उतना डिफिकल्ट वाला नहीं किया था। यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट था और अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में बताइए। ट्रेडिशनल फूड्स तो बहुत ही, मतलब बहुत हेल्दी लगा, मतलब एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा भारी फील हो रहा है। बिल्कुल बहुत हेल्दी लगा, बहुत तो अच्छा था। मीट कौन सा ट्राई किया आपने? मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो स्वीट। तो फिर नेक्स्ट आने का कोई नेक्स्ट तो अभी जब भी हमारी छुट्टी होगी तो हम बिल्कुल आएंगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, तो आपसे जानते हैं। तो आपका नाम? हाँ, माय नेम इज जितेंद्र और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरे तरफ पहाड़ नहीं है, तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था कि काश मैं पहाड़ों में वादियों में रहता। तो एक ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं अपॉर्चुनिटी पाया और फिर यहाँ आने के बाद IIT गुवाहाटी। और एक तरह से इंजॉयमेंट ही हम लोग किए, सब दोस्तों ने, सबने। और जैसे आप जानते हैं कि डिफरेंट स्टेट से हम लोग आए हुए हैं, तो एक कोलैबोरेशन का जो हम लोग स्कीम बना के चल रहे थे, वो भी बहुत नाइस था। और लगभग 4 दिन हम लोग 7वें आसमान पे रहे हैं। तो यहाँ के बारे में बताइए कि मतलब यहाँ के लोगों के बारे में लोगों के बारे में तो बस यही कहा था कि नेचर ही इनका गॉड है। तो नेचर जहाँ नेचर को ये लोग वर्शिप कर रहे हैं, उसी पे डिपेंडेंट है पूरे। वो मैंने ये मतलब कि महसूस किया है कि यहाँ लोग उतना आर्टिफिशियली जो भी मार्केट की चीज़ें उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पानी से लेके, यहाँ पे चरनी से लेके और कपड़े से लेके हर चीज़ ये खुद तैयार करते हैं। तो ये अमेजिंग रहा मेरे लिए देख के, ऐसे भी एक जीवन जिया जा सकता है। और ऑलरेडी मैंने कैंप किया हुआ है, मैं NCC कैडेट रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने 3-4 कैंप उधर किया हुआ है। मैंने एक माउंटेनिंग का प्राइमरी कोर्स किया हुआ है, मैंने IIT BHU में। तो फिर वहाँ पे तो नॉर्मल था, हम लोग नॉर्मल कैंपिंग किए। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैकिंग था वो बहुत ही, मतलब कि हम लोग को कुछ ना कुछ फेस करने को मिल रहा था। यहाँ हम लोग रॉक क्लाइंबिंग भी किए, ट्रैकिंग भी किए और लगभग हर प्रकार की ट्रैकिंग किए हम लोग। तो फिर बहुत इंजॉयमेंट किए हम लोग। तो आपका फेवरेट मतलब आपका मोमेंट, ऐसा कोई एकदम स्पेशल मोमेंट कब? 4 दिनों में? मैं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हूँ, तो
एक जगह मैंने देखा गाइड जो थे हमारे, तो उन्होंने जस्ट गर्ल्स को थोड़ा दिक्कत और परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने क्रॉस करा रहा था, तो उनका पैर जस्ट गिरने वाला था, तो वो अगर मैंने पकड़ा नहीं होता तो चले गए होते, तो मेरे लिए अच्छा पड़ता, सबसे यादगार मोमेंट था। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपका करियर के बारे में एक्चुअली मैं IIT गुवाहाटी में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, मैं मास्टर्स इन लिबरल आर्ट्स कर रहा हूँ यहाँ पे। वो क्या होता है? एक्चुअली ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। इसमें हम लोग सोशल साइंस और आर्ट्स की सब्जेक्ट्स को और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और डिजिटल ह्यूमैनिटीज के साथ पढ़ते हैं। तो एज हम लोग को ये ओवरऑल को डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है, और हायर स्टडीज़ के लिए मेनली कोर्स डिजाइन किया गया है, और हम लोग इनागरल बेस से यहाँ पे आए हुए हैं। तो घर वाले खुश हैं कि आप इतना दूर आए हैं, तो चेकिंग के लिए आए हैं, तो आपने वीडियो कॉल किया घर वालों? एक्चुअली मैंने घर पे बताया नहीं है, एडवेंचर करना चाहता था, तो थोड़ा बस सिग्नेचर मैंने लिया है, लेकिन ये कह के लिया है कि मैं जा रहा हूँ ऐसे दोस्तों के घर ऐसे जा रहा हूँ, और मुझे अपने इंस्टीट्यूशन से ऐसा देना पड़ेगा, तो फिर मैंने ऐसे करके लिया है। तो आपका कोई स्पेशल फ्रेंड, आप उनका नाम लेना चाहेंगे? हाँ, फ्रेंड्स तो कई सारे यहाँ पे बनाए भी हैं, तो अब स्पेशल तो सब लोग हैं, मेरे लिए सब लोग स्पेशल ही हैं लगभग। आपका कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं। तो आप सिंगल है? हाँ, अभी सिंगल। ओके, थैंक यू सो मच। अब आइए जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य है, मैं चेन्नई से हूँ। आप अभिषेक बच्चन जैसे लग रहे हैं। धन्यवाद। बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा गाता है सर। आप गाते हैं तो पहले गाना सुना जाए, प्लीज एक गाना तो बनता है, क्लासिक वही तेलुगु है। चलिए गाइए। री सा सा सरी री सा सरी सा सा सनी सरी सनी सरी सरी सनी द नी 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 द द नी नी द द नी नी द नी नी द नी सा द नी सा द नी द गरी सा नी द प द द द गरी ग म म ग गरी ग म म ग गरी ग म प ग म प द म द प म गरी सनी सरी ग सरी गरी म ग प म द प म ग प म द प नि द प म द प नि द सा नि द प नि द सा नि री स गरी स गरी स नि द री स नि द प सा गरी स नि द री स नि द प सा नि द प म री स नि द प नि द सा नि द प म प री स नि द प सा नि द प म द प म गरी ग म द नि द नि प द म प री स नि द प नि द प म गरी री स नि द प म गरी स नि शंकर भरणमो। Is it offering to God something like that? हाँ, मैं कर्नाटिक म्यूजिक सीखा हूँ। अच्छा। 18 वर्ष। तो इसमें ये जो गाना अभी मैंने गाया, मैंने केवल इसके अंतिम पंक्ति गाया जिसमें केवल स्वर था। इस गाना का अर्थ ये है, इस संगीत का अर्थ ये है कि ये जो संगीत है, ये जीवित हो या मृत हो, प्राण से जुड़ा हुआ है। so sweet. ये है इस संगीत का सार। आपका एक्शन ना, वो क्या बोलता है, वो थ्री इडियट में जो वो क्या बोलता है, वो चतुर से मिलता है आपका जो वैसे मेरे अध्यापक जी ने मुझे यहाँ आने के लिए, आके आपको इंटरव्यू देने के लिए इसलिए प्रेरित किया, ये मेरे हिंदी के कारण। तो आपका कैरियर के बारे में? मैं एमटेक से हूँ, सेकेंड ईयर, द्वितीय वर्ष। एमटेक के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, मतलब कैसे स्टूडेंट को, मतलब ठीक है, किस प्रकार का उनको, मतलब ठीक है, एक्चुअली किस प्रकार से, मतलब ये फील्ड जो है ना, मतलब स्टूडेंट को कैसा, मतलब अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से? ठीक है, आप बीटेक या एमएससी, किसी भी एमएससी किया, अर्थात वो भी एक पीजी ही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ही है, पर फिर भी लोग आते हैं यहाँ पे एमटेक करने के लिए। उन्हें एग्जाम लिखना है जिसका नाम है गेट। अच्छा। GATE, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसमें 2 पेपर्स है, बायोटेक्नोलॉजी अन्यथा लाइफ साइंस। मैं केवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा। उस बायोटेक्नोलॉजी अन्यथा ये लाइफ साइंस के पेपर लिखने के पश्चात एनरोल करना पड़ेगा IITs में। तो अपने रैंक के अनुसार वो उचित IIT में सीट दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो कौन और बात करना चाहेंगे? आप आइए। तो लगता है आप सबसे छोटी है, मतलब नहीं हाइट नहीं, मतलब एज से भी, मतलब देखते हैं ऐसा, मतलब
किसी ने कमेंट पास किया, थैंक यू। ओके, वैसे आपका नाम? মোৰ নাম নীলাক্ষী কাকতি হয়, মই অসমীয়া হয়। আচ্ছা অসমীয়াত কোৱা, হয় অসমীয়াত কোৱা। আচ্ছা তুমি গুৱাহাটীৰ পৰা নে? হয়, গুৱাহাটীৰে হয়। বাট ইউ লুক লাইক ফ্ৰম সাউথ ইণ্ডিয়ান। নহয়, মই অসমীয়া হয়। অসমীয়া হয়। কেনেকুৱা লাগিছে? প্ৰথম আহিছে নে কাৰ্বি আংলঙত? কাৰ্বি আংলঙত প্ৰথম আহিছোঁ, বহুতে বেছি ভাল লাগিছে। মানুহখিনিক লগ পাই বহুতে বেছি ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ ধৰক ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডছ হওক বা এডভেঞ্চাৰটো কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু কি বুলি ক'ব আমাৰ জিলাখনৰ মানে গোটেই জনজাতি ৰাইজক? কাৰ্বি আংলং মানে অসমৰ বহুত মানুহে মানে অহা নাই আৰু ইমান ভালকৈ নাজানে। ডান্স দেখিছে, কাৰ্বি ডান্স দেখিছে, বাট খানা ইমান ভাল মানে আমি কেতিয়াও আগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাছিলোঁ। তো বহুতে ভাল লাগিলে, ডিফাৰেণ্ট হয় অসমৰ বাকীখিনিতকৈ পৰিমাণে, আৰু মানুহখিনিৰ হস্পিটেলিটি বহুতে বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ট্ৰেকিংটো কেনেকুৱা লাগিছে পাহাৰত গৈ? আগে পিছে গৈছে জানো? মই মেঘালয়ত অলপ চলপ কৰিছোঁ, বাট ইমান ৰিস্ক মানে ইমানখিনি কৰা নাছিলোঁ। মা দেউতাহঁতে গম পায় নে তুমি ইয়াত আহি আছা? গম পায়। আৰু তোমাৰ কেৰিয়াৰৰ কথা ক'বা। ময়ো MTech কৰি আছোঁ, বায়' ইঞ্জিনিয়াৰিঙে হয় মোৰো। आदित्य যেনেকৈ ক'লে सेम है सेम नो ओके ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और कौन आइए तो आपका नाम और आपका जर्नी के बारे में बताइए। मेरा नाम साक्षी है और ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल थी हमारे लिए, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली के लोग यहाँ पे आकर जो भी देख रहा होगा, लोग जानते होंगे दिल्ली काफ़ी मार्केटिंग प्लेस से बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे सरोजनी नगर, ताजमहल, लाल किला, बहुत सारी जगह। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग आए यहाँ पे विजिट करें। असम बहुत ही सुंदर जगह है। आप लोग गुवाहाटी के अलावा जो हम यहाँ पे कार्बी आंगलोंग हमने विजिट किया, वो एक कल्चरल आपको एक अट्रैक्ट करेगा बहुत ज़्यादा, जो कि आपको ऐसे प्लेस में नहीं दिखेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटी प्लेसेस होंगे, जैसे दिल्ली हो गया। तो मैं चाहूँगी यहाँ के लोग बहुत स्वीट है, खाना बहुत अच्छा है और आप बहुत हेल्दी रहेंगे। बस। तो आपने कौन सा ट्राई किया फूड, जैसे कि आपने पोर्क ट्राई किया? पोर्क के अलावा बैम्बू हमने जो वो बैम्बू का जो बना हुआ जो चाय होती है वो ट्राई किया। चाय के साथ हमने बैम्बू राइस खाया। फ्लेवर आया बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा था। साथ में हमने चिकन खाया जो भी वो बैम्बू से बना हुआ था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और साथ ही साथ यहाँ का जो ड्रेसिंग कल्चर, यहाँ के लोग बहुत स्वीट है। तो बस मेरे लिए यही रहेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ असम में फिर दोबारा, तो मैं उसके अलावा और जगह भी घूमूं, और जगह जो अनडिस्कवर्ड एरिया है यहाँ के, तो वहाँ मैं फिर दोबारा जाऊँ। और जो लोग भी देख रहे हैं, प्लीज आप यहाँ पे आइए, इनके साथ मुलाकात कीजिए, बहुत ही बेस्ट जगह है। आपका करियर के मेंबर? एक्चुअली मैं यहाँ पे MTech कर रही हूँ और मैं फाइनल ईयर बायो साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। अरे वाह। यस यस। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। और everyone, all the best. इनको थैंक यू बोलो। Thank you. Bye bye. So, और कौन आना चाहेंगे आप प्लीज? हाँ, तो अब मैं दिव्येंदु हूँ, मैं आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यहाँ पे MSc केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हो रही है। अच्छा, तो आपका जर्नी के बारे में बताइए। 4 दिनों का जर्नी। पहले तो मैं मेरे जो आसामीज फ्रेंड है उसको जब बोला था कि मैं कार्बी आंगलोंग जा रहा हूँ, वो लोगों से बहुत नेगेटिव मिला था न्यूज़, लेकिन यहाँ पे देखा कुछ और ही है, बहुत पॉजिटिव सिचुएशंस ही है और लोग बहुत अच्छे हैं, स्वीट है एंड कल्चरल थिंग्स एंड जो उनका जो खाने का जो हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा लगा मुझे A to Z। तो आपका फूड के बारे में बताइए, आपने कौन सा ट्राई किया? फूड का मैं पोर्क ट्राई किया, मैं वो बम्बू वाली चाय ट्राई किया, फिश ट्राई किया, एवरीथिंग वाज सो नाइस। तो आपका फ्यूचर के बारे में अभी तो MSc चल रहा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू PhD। तो आपके घर वाले पता है कि आप इतना हाँ पता है, मैं बोला था। वीडियो कॉल किया था? वीडियो कॉल में नहीं, लेकिन एक्चुअली नेटवर्क का इश्यूज था, तो मैं फोन में हुआ था थोड़ा बहुत। दोबारा आना चाहेंगे आप? हाँ ऑब्वियसली आना चाहेंगे। थैंक यू। और कौन सर कोई? सर आ जाइए। नमस्कार, माई सेल्फ पंकज कुमार एंड आई एम अ टेक्निकल ऑफिसर इन IIT गुवाहाटी। तो हम लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को साथ में लेके आए थे और मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ रियली अ मेमोरेबल इवेंट फॉर अस। और मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो मुझे गूज बम्प होता है क्योंकि जब भी आप बात कोई दिल और दिमाग को एक करके बोलते हैं तो आपको गूज बम्प आता है। सो स्वीट। मुझे
अगर खाने के बारे में बात करें, दैट्स रियली यू नो अमेजिंग, और उनका हॉस्पिटैलिटी दैट वे मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और हर तरह से हमें जो सपोर्ट मिला, चाहे वो रहने के लिए था या टूर गाइड हैं हमारे उनकी तरफ से, और हमारे जो ईएम साहब हैं अपना कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस, जी जो अभी जो आके गए हैं, तो उनका बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिला। अच्छा, एक्चुअली मतलब हम तो नॉर्मली सोच रहे थे कि कोई कैंपिंग वगैरह करेंगे कहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अरेंज किया, दैट्स रियली अमेजिंग एंड ट्रेमेंडस फॉर अस। व्हाट वाज योगा ऑल अबाउट? आई हैव सीन द वीडियो योगा के बारे में बताइए कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसे रहा वहाँ पे? जी हमने योगा का जो वहाँ पे अटेंड किया, वो उसमें हमने जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में जाना, और वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। कोई भी जो उसके बारे में कुछ और ऐड ऑन करना चाहता है, तो मतलब अपनी लाइफ का पूरा डायरेक्शन वो चेंज कर सकते हैं। Kadong Karbi Anglong Live kelang ratunduan pininil tum Karbi Anglong Live pendili non mat karja bangke lada ke Mahamaya labangso Anglong labangso mondir long sidolo nili Bikram Teron lapen nili long nang Abdun cameraman abor lang ni ni tum Karbi Anglong Live pen pini dak nang karja Abdun athepi bangelalo Asam nalong jasabet NSS labangso IIT tum labangso student atum jasabet alang itum winter annual labangso ajai meg deng bom si bang bom lo alang litum kapek adim long si dam alang litum labangso annual winter annual labangso program long ke alang litum konane Meghalaya state ta ho konane Tamil Nadu ta ho ningkan lang sabe alang litum isi location choice po haladak se alang litum ningkan sector alang litum chipati people mete alang litum hadak dam po ke alang litum alogot ke bang ke resource person tum doping wildlife photographer pen chenglok crime branch pen chenglok ason alang litum la resource person chivan po lason se alang litum student ang mong interaction do po kapek dim dam lo polo te hadak isi research do po lason se alang litum chipati people lo ladak bang ke litum Karbi Anglong Tourism Department atum ta labangso alamo chini dun si jasamet EM retaining hi Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department alang li si alang litum ben chingki che than si Karbi Anglong le non phong bang ke nalitum NSS IIT labangso annual winter bang ke nalitum ladak Karbi Anglong le bang inoi isi pen ke litum ta cherap chetulo lapen nalitum Karbi Anglong apur kimo aputhak punon dak wildlife aputhak punon dadak inglong lir sengsang atumu punon nalitum angton pestami chini pon podak waterfall pen chenglok dadak greenery lapen ladak forest atum PPC ke claim pon malhayang ton pestami nalitum chini pon popusi alang litum phanchuk phapon lopin dak bangke dogmoka ren sahin besi ladak labangso program long mange pati pipon lo lapen ke alang litum pini tarik krep hopen alang litum tarik kri nerke bana lang litum kri sira nerke bana lang litum 2G 18 ana lang litum 2G 15 ben 18 ana lang litum dak 2G lapen pena babangke lang litum siluni jam lapen lang buku trekking samya lang litum damji kapek adim sam dampo lapen DC tum ben same lang litum student ang mo interaction do po lapen kapek intellectual tum pen samya lang litum interaction na bangso program deng pon po lapen pini bangke ladak WWF atum same nang chitong dun lapen ladak nang chitong dun bangke ladak thong nokbe Professor Penchenglok Bablu Busumati Penchenglok ke W Busumati Penchenglok lapen la WWF officer tum stame alang litum la
wildlife ke claim cepadu katum same alang litum community fishery community forest aputak same alang litum cingki cethan padu ponpo tang te labang so video nang tum nanglang dong mama. Hello everyone, I am Namonika Radha from IIT Guwahati from HSS department. So what do you think about the camp? First of all, I'd like to thank IIT Guwahati NSS Cell for giving us the opportunity to visit Karbi Anglong. And Karbi language, Kardom means namaste. Kardom. So thank you IIT Guwahati for organizing such a very wonderful program here. And this is a very holy place. This is known as Mahamaya Tham. Mahamaya means Durga Devi. I think you know Durga Devi. And so Mahamaya, this place name is Mahamaya Hill, Mahamaya Pahar or Mahamaya Tham. It's a very mesmerizing here to be. You see, this hill is very specifically is that if you see this hill from any side, the shape is same. From every side, this shape is same. And so it's a very long history, and people used to worship here Lord Mahamaya. And you know, Karbi Anglong is the greatest, this is the largest district in Assam. And so we are a variety of tribes. We are together here, we unitedly we live here. And this is a very great moment for us to have you, like most talented and most efficient student of India. And so we welcome you here in Karbi Anglong in this very direction. Thank you very much. Thank you. So now may I request sir to introduce yourself and then. Thank you. My name is Dr. Anupam Sharma and I represent WWF India. I've been working in this organization for the last nearly 20 years in Assam. And by training, I am actually a biologist. In fact, actually my training was in biotechnology. I was a molecular biologist. So, but now I work for large number conservation in WWF India. So you are in a place which is, I think, very unique in terms of its, I think, everything. I mean, from the natural heritage and the cultural heritage in this northeastern part of India. And as my friend has already told you that this was the largest district of Assam. It is almost 1,300 plus square kilometer. I think 13,400 something square kilometer. But now that district, Karbi Anglong, has been divided into, in 2016 it was divided into two districts. Now one district is Karbi Anglong and the other one is West Karbi Anglong. So there are two districts now under this Karbi Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council. And I'm sure most of you already know that in Assam, there are certain, autonomous councils. Okay, so these autonomous councils are formed under a special provision of the Indian Constitution under 6th schedule. That means they they enjoy some, special privileges under this act, under these constitutional provisions. So, in Karbi Anglong Autonomous Council, now I have told you there are two districts, and it's a very biologically rich. But generally when we talk about Assam, we connect with Kaziranga, rhino, tea, all these things. Karbi Anglong we don't talk much about, but it is a part of Assam which is of course the only hills district at some point of time. Okay, so
not only actually, there is another district called Dima Hasao now. That is the North Kachar Hills. So that is also under, it's run by North Kachar Hills Autonomous Council. That is a different tribal council. Like BTC, we have Bodoland Territorial Council. So similarly, it is the Karbi Anglong Autonomous Council. So we, being a part of this organization, WWF India, we work for nature conservation. And we have been working in Karbi Anglong. Of course, I agree that we have not been able to do much because it's a very different territory. And all of us, at least the senior people sitting here, would appreciate the fact that it's maybe around nearly 8-10 years back, it was a difficult place to work. Insurgency and other some more social unrest was there. But now it is a very different scenario now. Okay, so you can go to any corner of Karbi Anglong, there is no issue. And a lot of development is also taking place in Karbi Anglong now. So talking about these things, actually in Karbi Anglong, although we have good forests, wildlife, but the documentation has been very poor. Like we know in Kaziranga how many tigers are there, how many elephants are there. But in Karbi Anglong, we don't have such information available in any public domain, right? Even with the department also, we don't have very good information. So that is something where Karbi Anglong needs to work on it. And we are trying to work with the government in Karbi Anglong to generate all those information and also, help the department how to manage these natural resources and how to, in a very inclusive manner, inclusive manner in the sense that we need to involve the communities, because involvement of communities in conservation of the natural or cultural heritage of Karbi Anglong is very important, because in Karbi Anglong, I don't know if you are aware of the fact that generally in the areas outside Karbi Anglong, in the state of Assam or anywhere, outside the 6 scheduled areas, so the land belongs to whom? State, right? Or otherwise to individuals. I may own a piece of land, you have a piece of land, but in Karbi Anglong or any other 6 scheduled state, the land belongs to the people, unless it is already with the forest department or with the government, So when this is, done, so in Karbi Anglong you will see there are areas, we call it notified forest areas. NFA, notified forest areas, it could be a reserve forest, it could be a district council reserve forest. I'm sure you may not be very familiar with these terms, reserve forest, wildlife sanctuaries, national parks. In Karbi Anglong we don't have national parks, but reserve forest, district council reserve forest, then proposed reserve forest, okay. So these terms have different, legal connotations. So outside those notified forest area, almost more than 40% of the land in Karbi Anglong is under USF. We call it USF, that means unclassed state forest. That means it's a state forest which is not classified yet. There is no classification. Okay. So it is unclassed state forest. De jure, our colleagues from legal background is also there, so will probably would be able to explain you. De jure, it belongs to the community. We call it, simply it is called community land or something. But it is the user right. So the tenure system in Karbi Anglong is very complicated in a way. It's complicated. It's not like, any other place in Assam or in any other parts of the country. So it's a bit complicated, and at the same time, it is with the community. That's for sure. That is why when we talk about conservation or management of natural resources, it is very important to involve or secure their support for natural resource conservation. Their support is very much necessary. Without involving them, actually, whatever conservation effort we may take, it may not be successful.
in India we have particular acts and laws to, for our natural resource management, for controlling wildlife crime and all those things. But above all, the participation of community, all those acts and laws will be applicable. But the what we call the these traditional laws, which at the village level, there are traditional institutions which they still follow those practices. Those recognizing those rights and privileges are also very important. Okay, so this may not be, like the Wildlife Protection Act we have. So this might conflict with those things, but that is also relevant. So those things are, although it looks complex, can't help, it is there. This is how it is. We'll have to recognize everything. We'll have to recognize the traditional rights and also the, whatever federal laws, acts we have. In Karbi Anglong, we've been working mainly for the natural resources and wildlife particularly. But wildlife alone cannot, exist anywhere. When we talk wildlife, generally we also talk about the habitat where it lives. Okay, so if we are talking about the rhino conservation in Kaziranga, definitely we'll have to also think about the grasslands or the wetlands. Okay, so we cannot see them distinctly from we will only talk about rhino, we will not talk about their habitat, that will not work. So similarly, when we talk about wildlife conservation or natural conservation in Karbi Anglong, it's a very large subject. We'll have to consider everything, starting from water, from where the water is coming. Maybe water is the argument we can talk about in Karbi Anglong for securing the nature. So people may not like to see tigers in my backyard because tiger is a potential threat. Or any wildlife. Yesterday 2 leopards were killed in the middle of Guwahati city. Because why? Why leopards? Because we are all educated people in Guwahati. But why 2 leopards got killed? Because people consider them as a potential threat, as a potential killer, right? Although we all, talk about conservation, this, that, we are very passionate about saving trees, saving wildlife, but when it comes to my backyard, then, I will not tolerate it. It is good from the safe distance. Okay. So, how sensitive are we, when we talk about conservation? Why do we need, conservation? Why a common people would like to see, wildlife all around? Why? We'll have to make them understand why this is important. If you are, because it's a very complex system. Natural system is very complex. If we eliminate one component of it, it might have, effects at different levels. If we are, particularly if you are eliminating one, maybe some insect, it might have other impacts. Some of your plants may not get, pollinated because of that. So all these things are very related, and we need to understand that. Definitely, it is, common people may not understand all those things, but it is our responsibility to make them understand why it is necessary. Probably at a larger level, we need to make them understand why conservation is necessary, how it is related to our day-to-day life, why it is important, how it is securing our life. Our source of life may be water, I am talking about pollinators. These are very important things. Very small, we may not, appreciate them in our day-to-day life, but it is very important. We are just, taking this for granted actually, but this is very important. So, I'd like to request my colleague Dr. Pranav Bora to talk about, our engagement in Karbi Anglong so far. Pranav? Thank you, Anupam. Actually, when Ritesh Singh sir called me to
2-3 months back, we have to interact with the students of IIT. Then we are confused what we'll talk to them. He was also not aware about that, what we have to talk. After a few days, he has given me a list. Then I have talked to my colleagues. Because we have spent around 20 years in Karbi Anglong for conserving nature and culture together. But we did not get the scope to interact with the students like you. I think this is the first time where we have talked to a group of people, students, that also from the outside. And thank you to the council as well as Rita Singh sir, actually giving us this opportunity, because Karbi Anglong, Anupam already mentioned about the Karbi Anglong, so rich, but outsiders are not aware about this. I am from the neighboring district, Nagaon. Before joining WWF, I never come to the districts. Even this area also, many people not aware about this. And this session actually is a very nice session for us, because we can link culture and nature in this place. One is nature and one is culture in surrounding us. And this place already our sir already mentioned about this place. And there is one more category for this place called District Council Reserve Forest. Mohamaya DCRF we used to call. Then it is the government term for conserving the nature, like Wildlife Sanctuary Reserve Forest. Council, they have their own provision to declare some area. You will not get this type of category in other areas, mainly especially in 6 scheduled areas. District Council Reserve Forest. It means it has some importance for nature. And regarding our work, when we have started our work in 2004, that time it was a very undisturbed situation everywhere. We could not move from one place to another. Even in daytime also it is not allowed to move. But now situation is different. Then it will help in Karbi Anglong. If we go to Kaziranga and people always think about the rhino or elephant, they will think that we will see rhino, elephant or any wildlife. But here it is only nature. That's why always we are trying to promote nature conservation rather than wildlife conservation in Karbi Anglong particularly, and similarly in Dima Hasa will be also same. Because if we have the nature, we will have everything. And this is our main importance, our motto for doing work in Karbi Anglong. And initially, we have worked in the fringe of Kaziranga National Park, and it was a difficult area inside Karbi Anglong. Then we have worked in the fringe of Kaziranga National Park, because Kaziranga is linked to Karbi Anglong. Do you have any idea about the Kaziranga area? Anyone? Have you been? Kind of. I did my internship there. I think I saw you there, sir. Is it? Yeah. Okay. We had this fest and everything. There was a big fest, and I think I saw you. Okay, thank you. And I will request your IIT authority, they should go to Kaziranga next, because then they can link both Kaziranga and Karbi Anglong. And it is just together, Kaziranga and Karbi Anglong. If you name the Kaziranga, you should talk about Karbi Anglong. If you talk to Karbi Anglong, you have to talk to Kaziranga, because all the animal they used to come through the national highway to Karbi Anglong during the flood or any time other part also. Then we have started our work there, and slowly we start working with the local community. And now we are giving more importance promoting conservation through local community participation. Of course, we are working very closely with the forest department, but side by side, we start working with local community. Anupam already he has mentioned about the
community areas where many parts of the Karbi Anglong are owned by the local community, and this area needs more important because the protected areas already the forest department they are taking care, but outside protected areas like this it is very difficult to control because of various anthropogenic pressures. We try to empower the local community so that they can conserve their nature, and it also linked to various ways, the water conservation and cultural conservation, everyone knows. And secondly, we have a very rich forest in Karbi Anglong. The forest department, they have some limitations. Due to various reasons, they are not able to support in protection. That's why local community participation also very important. Then we are trying to strengthen their capacity also as a part of our work at the forest department by providing various logistic support so that they can do their work properly and they can communicate to local people. And another important issue, everyone you might know about the human-wildlife conflict in Assam. Now every news, every paper, every day there is a news of elephant death, human death because of various reasons. In Karbi Anglong also the same situation in various parts. And now we are in Karbi Anglong, there is only 2 districts he has already mentioned. Now in Karbi Anglong, and another is the West Karbi Anglong. In West Karbi Anglong also in some part becomes a very major issue. In that case also we try to work with local community so that they can manage their manage to protect their property in Karbi Anglong. And we have 2 elephant reserves covering whole the Karbi Anglong, mostly this one. That it means how important this area for wildlife. And that's why every people or government they have to do more work for conserving nature and wildlife conservation work. And already Anupam has already mentioned long distance movement for the elephant. They used to move from here and there everywhere. This is Kaziranga. That's why Kaziranga is very connected to Karbi Anglong. For secure Kaziranga, we have to secure this place in greater way. Do you have any idea about this, what Pranav is talking about, reserve forest, district council reserve forest, wildlife sanctuaries, national park? Do you know about all these things? Any idea? Any idea? Is it different? Is it similar? No, there are some differences. Some terms. Like? Like there is a difference, like in one way local people can go and use some particular part, or then they can use for wooden part and all that, but in another way, in other term they can't use that kind of Yeah, in a way it is like that only. So you see in Indian would you like to talk about it? Yeah, I was thinking my thing was good. Then I'll close. Then yes. So this is some brief about the wildlife and nature of Karbi Anglong. And presently we identify potential areas, areas which are important in terms of biologically important, the natural resources rich, where there is a history of people conserving their local areas. So we try to identify those areas, consulting with different experts, right? So there could be academicians, there could be forest department who know about the place
administration. Na? So we identify those areas, we go into the community, and basically we start seeding concept about. We don't have to work much because conservation is nothing new for the people of Karbi Anglong. They already are doing it. What we want to do it, we have to, we are trying to, So what we do is we want to, mobilize the community, the entire community. We want to make them form strong institutions who can decide how to manage the resources that they have. We help them in demarcating the area. So basically, every village in Karbi Anglong, they have a designated area for farming, for pujas, for everything. Okay, so we divide it in two categories. One is sacred grove or area important for important in terms of natural resources, and the other area is we call it multiple use area, which is community, which community is using basically. So there are ponds, there are fisheries, there are paddy lands, there are some plantation work going on. So we help the community to map the entire area, and also we train them to identify the natural resources. So if there is any tree which is very important, very old, any plant species is there, if there is any animal species which is very important, so we help them to identify. They already know it, but there is a scientific way of doing it. So we put camera traps, we help them with biologists who can help them in identifying and documenting. Proper documentation of the area is done. So basically, whatever natural resources they have, we help them to properly document it. Once they document it, then we start engaging with them, sit with them, and ask them tell me how, what is your plan to conserve this area for a longer period? How do you sustainably use these resources? Okay, so this is what we are presently doing. The communities, like Anibanda said, we are also trying to form institutions. What we call is like community CCA management committee, community conserved area management committee. So there will be a local body who will basically take the decisions on the natural resource management part. So this is basically, so it requires a lot of engagement, discussions with the community, mobilization, and also awareness. Okay, so the awareness level, it can't be like this. WWF India awareness level is like that and community is here. It can't be like that. So there should be a balance. Community should be equally equipped, equally knowledgeable. They should be empowered to take their own decision, right? So once they develop the management plan of this particular area of the CCA, they'll be asked to roll it out basically. So there will be some rules and regulations. Say for example, if a particular area, if there is one plant species which is very rare and it is about to get extinct, so the community might take decision that this plant species will not be cut. So we will have to keep this intact. So this is how it is completely on community. What to protect, how to protect, which area to cultivate, which area to leave, so that again the regeneration of the forest happens. So it requires a lot of discussions, and ultimately it is up to them what and how they want to do, about this natural resource management of this area. So this is it basically. It's a long process. We have just started in probably since last 5-6 months we are working in Karbi Anglong. We are also learning basically because every area, every potential CCA area is very different. In east, this portion is Karbi Anglong East. We don't call it Karbi Anglong East. It is known as Karbi Anglong only.
Karbi Anglong East is the forest, the culture is quite a bit different than the West Karbi Anglong, west part of Karbi Anglong. West Karbi Anglong is more rich. The forest is rich. The culture is very strong. The Karbi king lives there, so there is a history of different kings ruling that place. Okay, so that if the potential CCA locations that we have identified so far is very different than the potential locations of east part. So naturally the management, whatever management plan will be developed by the community will be very different. One thing is that. Second thing is, another part is what we are also trying to look at. Say for example, a community decides to cultivate in a particular area instead of going for shifting cultivation, which means what happens is shifting cultivation. They have to clear lands, right? Year after year, they have to clear lands and then leave they do it. Even the agricultural pattern is also very different in Karbi Anglong, in West and East Karbi Anglong. So if a community decides that they will stop shifting, it is just an example I am giving. So if community decides we are not going for shifting cultivation, we are going for regular cultivation. So what they will require? They will require land, right? They will require water, for irrigation. Probably they will require scientific knowledge. They have to probably previously they were doing rice, of different variety of rice, and now they'll have to do something else. So this is also we are also looking at, right? So if a particular area needs to be conserved, then community decides that certain things will be banned, or we won't be doing it. We want to change the practice. So we are also trying to help bringing in the resources. So if water is needed, our job will be to bring the water department to work on water conservation, so that the irrigation, the agricultural practice can be changed if needed. It is just an example I am giving. Okay, if say for example, if the community thinks that 1 hectare of land is barren and we want to help the vegetation grow, so how to do it? We can probably help them in doing that. So there is a very natural process of doing it. There are artificial processes also plantation kar sakte hain, ye sab kar sakte hain. So whatever it is, our role will be to bring in the resources to expertise, so that these practices can also be changed, so that the forest, whatever natural resource is there, is conserved, and the livelihoods of the communities is also secure. In West Karbi Anglong, because it is a very historically rich place, there are several places where you will find places of historical importance basically. So that can also be promoted as a source of livelihoods. People are already doing it if you Google karte ho aap log ko, you will find there is a place called Umswai Valley, and people are doing it. But how can we promote it? How can we make stronger institutions so that these different kinds of livelihoods can take place and become more beneficial for the community? This is also another a part of the process. Thank you. Are you all hungry? মোৰ লগত আছে আমাৰ যেটো আপোনাৰ IIT গুৱাহাটী বিভাগৰ তেওঁলোকৰ যেটো উইন্টাৰ কেম্প এনুৱেলি তেওঁলোকে কৰি আহিছে, আৰু এবাৰ মানে আমাৰ এক জিলাত আহিছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত। গতিকে তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে অকণমান। হয়, চ' একচুৱেলি আমি IIT গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। আমাৰ নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কিম তাৰ ভিত্তিত আমাৰ 40জন ল'ৰা ছোৱালী আহিছে IIT গুৱাহাটীৰ পৰা, তাৰ লগত আমাৰ অফিচিয়েলো আহিছে। চ' আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে এই উইণ্টাৰ কেম্পত আমি কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়ে
কাৰ্বি আংলঙৰ ৱাইল্ড লাইফ কালচাৰ তাৰ বিষয়ে যাতে IIT ল'ৰা ছোৱালীখিনি জানে আৰু আপুনি জানে যে IIT গুৱাহাটীৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অকল অসমৰ নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে গতিকে তেখেতসকলেও আমাৰ অসমৰ বিষয়ে জানক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিষয়ে জানক সেইটোৱে আমাৰ মেইন লক্ষ্য আৰু এইটো প্ৰগ্ৰামতে আমাৰ বহুত ধৰণৰ ছেশ্যন ৰখা হৈছে ইয়াৰ ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে কালচাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ট্ৰেকিঙত যাব বিভিন্ন ফৰেষ্টৰ বিভিন্ন পাৰ্টত যাব আৰু তাৰ পৰা মই ভাবোঁ তেখেতসকলে বহুত শিকিব আৰু সেই তেওঁলোকে যিখিনি জানিব কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়ে অসমৰ বিষয়ে সেইখিনি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈও বেলেগক ক'ব আৰু তাৰ পৰা আমাৰ অসমৰ বিষয়েও ভাৰতৰ বিষয়েও ভাৰতত বহুত জানিব সেইটো এটা আমাৰ কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচী এইটো আজি 15 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আমাৰ 18 তাৰিখে আমি ঘূৰি যাম ইয়াৰ পৰা কি এইটো কাৰ্যসূচীত কি প্লানিং আছে কি মানে ধৰক কি কৰিব আপোনালোকে হয় হয় তো আমাৰ মোষ্টলি কাৰ্যসূচীবিলাক হ'ল যে আমাৰ হাইকিং মানে যে ট্ৰেকিং কৰে আমাৰ দুই এটা জেগাত আমি ট্ৰেকিং কৰিব যাম তাৰ বাহিৰেও আমাৰ ইয়াৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন কিছুমান আহিব ইয়ালৈ তেওঁলোকে আহি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অকণমান এই কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়ে ক'ব ইয়াৰ কালচাৰ ইয়াৰ ৱাইল্ড লাইফ ইয়াৰ ফৰেষ্ট যেনেকৈ এতিয়া যিটো ছেশ্যন হৈ গ'ল ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ফাণ্ডৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ছেশ্যন আমি বিভিন্ন ৰাখিম আৰু এই 2 দিনত তেওঁলোকে অলপ ভাল পাব কাৰণ তেওঁলোকেও আমাৰ নট অনলি ছেশ্যনছ তেওঁলোকে অকণমান ফৰেষ্টত ঘূৰি মেলি অকণমান ভাল লাগিব তেখেত মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰো সেইটো এটা উদ্দেশ্য গতিকে এই ধৰণে আমাৰ প্লেনখিনি কৰা হৈছে আজি কি ডিছকাশ্যন হ'ল আপোনালোকৰ মাজত ষ্টুডেণ্ট হয় আজি আমি দুপৰীয়া আহি পাইছোঁ আৰু দুপৰীয়া আহি আমাৰ এইটো WWFৰ যিটো এতিয়া ফাংচন হৈ গ'ল ছেশ্যন হৈ গ'ল তাত ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে জানিলে যে কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ ৱাইল্ড লাইফ কি এটা পিকুলাৰিটি আছে বাকী জেগাতকৈ কেনেধৰণে বেলেগ আৰু ইয়াৰ ৱাইল্ড লাইফখিনিৰ লগত আমাৰ হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ যিটো কনফ্লিক্ট হয় সেইটো চেলেঞ্জবিলাক আমি কেনেকৈ ইয়াৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ফাণ্ডে কেনেকৈ ট্ৰাই কৰি আছে তাৰ লগতে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে আমাৰ যি ছাপৰ্ট দি আছে এইটো ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে মানুহে জানক কনফ্লিক্টটো কমক সেই বিষয়ে ল'ৰা ছোৱালীখিনি জানিছে আৰু মই ভাবোঁ সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ IIT গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি টেকনিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰো আছে গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যদি কিবা নতুন প্ৰজেক্ট বা তেনেকুৱা কৰে হয়তো কাৰ্বি আংলঙৰ এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নলেজখিনিৰ পৰা বহুত শিক্ষা পাব আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো কিবা নতুন ধৰণৰ আইডিয়া টেকন'লজিও ক্ৰিয়েট হ'ব সেইটো এটা মোৰ এটা মানে বিশ্বাস আপোনালোকৰ টীমৰ লগত কোনো ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আহিছে নেকি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আমাৰ লগত আছে আৰু হয়তো আৰু দুজনমান আহিব এইকেইদিনতে হয় আৰু এনে যোৱা বছৰ আপোনালোকে ক'ত প্লেনিং কৰিছিলে যোৱাবাৰ আমি কোকৰাঝাৰত কৰিছিলোঁ তাতে আপোনাৰ কয়লা ময়লা বুলি যি এটা মানস অভয়াৰণ্যত এক্সটেনশ্যন এটা আছে সেইটো জেগাত আমি গৈছিলোঁ তাতো আমাৰ মোষ্টলি ফ'কাছ আছিলে ৱাইল্ড লাইফৰ ওপৰতে তাতো আমি ধৰক চিমিলাৰ প্ৰগ্ৰেমে কৰিছিলোঁ কিন্তু তাত সেইটো এৰিয়াৰ বিষয়ে ফৰেষ্টৰ বিষয়ে আৰু তাৰ ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে আমি মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি জানিছিল এনিৱে আমাৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন শ্বৰ্ট টাইমৰ কাৰণে আপুনি ইণ্টাৰেকশ্যন দিয়াৰ বাবে খুব ধন্যবাদ থাকিল আৰু আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰাম যাতে কোনো মানে ছাকচেছফুল যাতে হয় তাৰ বাবে শুভেচ্ছা থাকিল বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ